Assalamu alaikum students, I hope all of you are fine. So today we are going to start with grade 7 understanding history and we'll be doing chapter 2 of this book today. The second chapter is Muslim Inventors and Scholars. So let's start. The expansion of the empire under the Umayyads and Abbasids also led to a culture and civilization particular to Islam. Muslim scientists, astronomers, mathematicians, doctors, and philosophers contributed immensely to science, literature, knowledge, and culture. स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में आप लोग कंसल्ट कर सकते हो, हमने उमय्यद और अब्बासिद्स के बारे में पढ़ा था। किस तरह से उमय्यद और अब्बासिद्स ने नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराईं। जैसे हमने उमय्यद के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने कैनाल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने रोड्स डेवलप किए, पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरह अब्बासिद ने हॉस्पिटल्स और लर्निंग पे बहुत काम किया, बैतुल हिकमा बनाया। तो वो सारा का सारा ग्रेट कंट्रीब्यूशन था मुस्लिम्स का। बहुत से मुसलमान साइंसदान, एस्ट्रोनॉमर्स, मैथमेटिशियंस और डॉक्टर्स ने भी साइंस, लिटरेचर, नॉलेज की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया। Baghdad, the capital of the Abbasid Empire, became the center of Islamic learning as well as the intellectual center of the world. Baghdad, जो अब्बासिद्स के ज़माने में कैपिटल था, वो इस्लामिक लर्निंग का मेन सेंटर बन गया। At the Batul Hikmah, scholars collected and translated work of the ancient Greeks and books from Persia, India, Syria, and North Africa into Arabics. बैतुल हिकमा, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी बैतुल हिकमा का पढ़ा था। इट्स दी हाउस ऑफ दी विजडम, मेन लर्निंग सेंटर था जहाँ पे स्कॉलर्स ट्रांसलेट करते थे वो अहम काम जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में हुए हुए थे, जैसे पर्शियन में, इंडियन में, अफ्रीकन लैंग्वेज में, और उनको अरबिक में ट्रांसलेट करते थे ताकि मुसलमान उनको पढ़ सकें, उनको समझ सकें और उससे फर्दर नई इन्वेंशंस कर सकें। हुनैन इब्न इसहाक अल-अबादी, an Arab Christian, was the main translator of the work of Aristotle, Plato, and Hippocrates from Greek into Arabic. Students, Aristotle, Plato, and Hippocrates, they were the ग्रीक फ़िलोसोफर्स जिन्होंने ग्रीक लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। तो इनका काम अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। एडिंग देयर ओन लैंग्वेज, फिर मुसलमानों ने उसमें अपनी फाइंडिंग्स और अपनी नॉलेज भी ऐड की। मुस्लिम स्कॉलर्स वर एबल टू मेक फर्दर इनोवेशंस एंड इन्वेंशन। अपनी नॉलेज ऐड करने के बाद मुस्लिम स्कॉलर्स उसके अंदर बेहतर डेवलपमेंट और बहुत सारी नई इन्वेंशंस करने में कामयाब हुए। दिस नॉलेज वॉज मेड अवेलेबल टू मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स एंड साइंटिस्ट ऑफ द टाइम. Arabic literature was translated into Latin and contributed to the idea of European modern philosophy. स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पर देखो बच्चों, पहले मुसलमानों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस का काम अरबिक में ट्रांसलेट किया। फिर मुसलमान जब सक्सेसफुल हो गए तो मुसलमानों का काम बहुत सी और लैंग्वेजेस में जैसे लैटिन में ट्रांसलेट हुआ और उसके बाद इट गेव द आइडिया ऑफ यूरोपियन मॉडर्न फ़िलॉसफी। जो आजकल हम यूरोप को इतना मॉडर्न कहते हैं, तो उस डेवलपमेंट के पीछे इट वाज द नॉलेज ऑफ द मुस्लिम स्कॉलर्स. Muslim science and technology developed up to 1258, brought enlightenment to the Dark or Middle Ages in Europe, and ultimately led to the Renaissance. डार्क एजेस, मिडल एजेस, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. देयर वॉज नो लॉ एंड ऑर्डर, देयर वॉज कोलैप्स इन द लर्निंग, देयर वॉज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द नॉलेज. ये मिडल एजेस थी यूरोप में, जब कोई नॉलेज नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था. उस टाइम पे मुसलमान साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे थे और उन्हीं डेवलपमेंट की वजह से ग्रेजुअली यूरोप इट केम आउट ऑफ देयर डार्क एजेस एंड अल्टीमेटली लेड टू दी रेनेसां. मिडल एजेस के बाद जो नेक्स्ट एज आई थी इट वाज द रेनेसां. अल-ख़वारिज़मी was a Persian Muslim scholar at Batul Hikma in Baghdad. Batul Hikma
जो हाउस ऑफ विजडम था, मेन लर्निंग सेंटर था बगदाद में, वहाँ पे ही वॉज द मुस्लिम स्कॉलर. ही वॉज अ मैथमेटिशियन who established the Indian numeral system and the use of zero in mathematics. So, ये अल-ख़वारिज़मी थे जिन्होंने इंडियन न्यूमरल सिस्टम और ज़ीरो का इस्टेब्लिशमेंट किया. His book अल-मक़ाला फ़ी हिसाबुल जब्र वल मक़ाबला laid the foundation of अलजब्रा. इन्होंने अलजब्रा भी इंट्रोड्यूस करवाया. And the system of logarithm and algorithms is named after him. He was also a philosopher and an astronomer and authored a book on geography titled किताब सूरतुल अर्ज़. सूरतुल अर्ज़ नाम की एक किताब इन्होंने लिखी ज्योग्राफी के बारे में. सूरतुल अर्ज़ इसके मतलब है द इमेज ऑफ द अर्थ. A crater on the far sides of the moon is named after him, and this is also an international award for mathematics in his name, as mathematics was his forte. So अल-ख़वारिज़मी का जो मेन काम था वो मैथमेटिक्स में था. इसके अलावा इन्होंने ज्योग्राफी की फील्ड में भी बहुत काम किया. His book किताबुल मनाज़िर, Book of Optics, comprising 7 volumes, was studied by Western scholars and led to optical research and later the invention of camera. So इनका मेन काम ऑप्टिक्स की फील्ड में था, आँखों के बारे में था, which was further studied by Western scholars. Western scholars ने उसको पढ़ा, उसके ऊपर में और रिसर्चेस की और उसके बाद कैमरा की इन्वेंशन हुई. The crater Al-Hazan, Latin version of Al-Hatim's name on the moon, and also the asteroid 59239 Al-Hazan are named after him. इनका मेन कंट्रीब्यूशन ऑप्टिक्स की फील्ड में था, लेकिन इसके अलावा इन्होंने एज अ एस्ट्रोनॉमर भी बहुत काम किया. प्लैनेट्स और मून के बारे में भी इनकी स्टडीज़ हैं. हिज geometry calculations and contribution in scientific research were a big stride in mathematics and science. Ibn Sina, he was a polymath. Polymath अभी हमने डिस्कस किया है that it's a term used for मुस्लिम स्कॉलर जिनको डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज पे कमांड थी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे जिनको कमांड थी. फ्रॉम बुखारा. ही वॉज अ हाफिज़ ऑफ द कुरान. हाफिज़ ऑफ द कुरान, इन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ था. एंड हैड मास्टर्स फिलोसफी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन. ही वर्कड एज अ डॉक्टर एट द रॉयल कोर्ट. ही रोट अ बुक ऑन मेडिसिन नोन एज कैनन ऑफ मेडिसिन. अल कानून फिल तिब, कानून के बारे में डिफरेंट लॉज, which was used in Europe till the 16th century as the main textbooks for medical students. मुसलमान साइंटिस्ट, मुसलमान रिसर्चर्स की बुक को यूरोप में एज द मेन टेक्स्ट बुक्स पढ़ाया जा रहा था. Ibn Sina, he died in 1037 in Hamadan, Persia, and is buried there. We see another Muslim scholar who was a Moroccan, who became famous for his geographical study of the then known world and for cartography. Cartography, its meaning making of the map, study of the map. He traveled widely and gained knowledge of Egypt, Africa and Indian Ocean and the Far East, which he compiled into a book, Kitab Nuzhatul Mushtaq, with accurate maps. अल-इदरीसी का मेन काम जो था वो ज्योग्राफी की फील्ड में था. उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ को विज़िट किया और उनके पास बहुत नॉलेज थी अबाउट इजिप्ट, अफ्रीका और इंडियन ओशंस की, और उन्होंने अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक बुक में कंपाइल किया. बुक का नाम था नुज़हतुल मुश्ताक, जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं थी बल्कि एक्यूरेट मैप्स भी थे. Al-Idrisi's work and his maps inspired later travelers and explorers like Ibn Battuta, Ibn Khaldun, Al-Biruni, Paris, Christopher Columbus and Vasco da Gama. इन्हीं का वर्क, अल-इदरीसी के वर्क से, इनके मैप से हेल्प ली डिफरेंट एक्सप्लोरर और ट्रैवलर्स ने जिन्होंने डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर किया. For 300 years, Al-Idrisi's map were copied by geographers without any change. किसी चेंज के बगैर, किसी तब्दीली के बगैर सेम मैप 300 years तक यूज़ होते रहे. Al-Idrisi served at the royal court of Roger II
at Sicily, where he died in 1161. Ibn Rushd. Ibn Rushd is acknowledged as the greatest Muslim philosopher of all times. His family served as qazis and imams of the Grand Mosque of Cordoba in Spain. Ibn Rushd learned and studied law, literature, philosophy, medicine, fiqh, and ahadith from the best scholar in Muslim Spain. He wrote books on law, philosophy, theology, grammar, astronomy, and medicine. Ibn Rushd was a versatile genius who greatly influenced the thinking of both Eastern and Western scholars on many disciplines or subjects for almost a century. Another great Muslim scholar, another great Muslim philosopher, Ibn Rushd. इनकी मेन फैमिली, इनकी मेन लाइफ स्पेन में गुजरी, कॉर्डोबा में, विच वॉज द कैपिटल ऑफ स्पेन. इनकी फैमिली काजीज और इमाम्स थी ग्रैंड मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा में. Ibn Rushd, he studied law, literature, philosophy, medicine, fiqh is Islamic law, and ahadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam की हदीसें from the best Muslim scholars of Spain. Then he wrote different books on different subjects. He was one of the greatest Muslim philosopher. Ibn Battuta. Ibn Battuta, he was the most famous Muslim traveler and explorer of all times. On foot, horseback, camel, and by sea. He covered 120,000 kilometers, that is 3 times the Earth's circumference. He visited Spain and traveled across all of the North Africa, the Middle East, Arabia, Turkey, Central Asia, and eastward to India, Maldives, Southeast Asia, and China. So he traveled to many places. Being a qualified Qazi, Ibn Battuta held that position for several years at the court of Delhi ruler Sultan Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq के court में he was appointed as a Qazi. He returned to his hometown in Morocco in 1354 and thereafter dictated the account of his travel, which was written down as the Rehla. So he spent many years in India and then he came back to Morocco, his hometown, और वहाँ आके उन्होंने अपनी सारे के सारा ट्रेवल एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीडिशन जो था वो एक बुक में नोट डाउन करवाया, दैट इज़ नोन एज रहला. Ibn Khaldun is known as the father of historiography. Historiography क्या है? It is the scientific method for the study of history. He wrote the famous book on the study of history, Kitabul Ibr, and its introduction, the Muqaddimah, is a masterpiece on the subject. He explained the cycle of the rise and fall of civilization and empires and how the effects of common men and the region's economy. When Europe discovered Ibn Khaldun's work in the 1800s, it served as an important guide to the development of the modern sociology and historical thinking. So Ibn Khaldun, he was known as the father of historiography. मेन इनकी फील्ड हिस्ट्री की थी और इन्होंने एक्सप्लेन किया the reasons, the cycle of rise and fall of different civilization. हमने देखा था कि डिफरेंट सिविलाइजेशन राइज होती हैं, उनका पीक टाइम होता है, उसके बाद उनका डिक्लाइन आ जाता है. सो इब्न खल्दून ने वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन की. इन्हीं बुक से यूरोपियंस ने हेल्प ली एंड दे यूज्ड इट एज द गाइड फॉर द मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोशियोलॉजी एंड हिस्टोरिकल थिंकिंग. द एंड ऑफ द गोल्डन एज. अभी हमने डिस्कस किया था मुस्लिम्स का गोल्डन पीरियड, जब मुस्लिम साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स, ट्रैवलर्स ने ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया था. नाउ दैट गोल्डन एज इज़ कमिंग टुवर्ड्स एन एंड. इन 1258, हलाकू खान, a Mongol leader, he attacked and destroyed Baghdad. And the learning of the House of Wisdom was lost to the Muslims. Muslims, they also lost the spirit of inquiry as science and mathematics came to be frowned upon by subsequent religious leaders. They then focused on these subjects only in the light of Quran and religious writings.
सबसे मेन रीज़न वॉज द अटैक बाय हलाकू खान। हलाकू खान जो एक मंगोल लीडर था, उसने बगदाद पे अटैक किया, बगदाद को डिस्ट्रॉय किया। वहाँ पे बैतुल हिकमा जो लर्निंग सेंटर था, मेन हाउस ऑफ विजडम था, उसको डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से मुसलमानों का इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, उनकी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारी ज़ाया हो गई। उसके साथ साथ मुस्लिम्स ने लूज़ कर दी इंक्वायरी की स्पिरिट। मुस्लिम्स जो नई इन्वेंशंस करते थे साइंस और मैथ्स में, वो सब कुछ ख़त्म हो गया ग्रेजुअली। एक रीज़न हलाकू खान का अटैक था, दूसरा रीज़न रिलीजियस लीडर्स थे, बिकॉज द रिलीजियस लीडर्स दे वर कंसर्न्ड अबाउट दीज न्यू इन्वेंशंस। देन द मुस्लिम्स, उन्होंने इन चीज़ों को, इन इंक्वायरीज़ को कुरान और रिलीजियस राइटिंग की लाइट में देखना शुरू किया। The golden age of Muslims came to an end with the fall of Abbasids, but their discoveries and innovations helped to bring about advances in science and technology in Europe from 1400 to 1850. अब्बासिड्स के बाद मेन गोल्डन एरा मुसलमानों का ख़त्म हो गया, लेकिन उन्होंने जो काम, जो डिस्कवरीज़ की थी, उसकी वजह से यूरोप में आगे बहुत ज़्यादा एडवांसेस हुई ड्यूरिंग 1400 to 1850. Muslim scientists has based their principle of study on not accepting anything as true till experimentation had proved it. तो मुसलमान हर साइंटिस्ट हर चीज़ को, अपनी हर बात को एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते थे. They also worked on the principle of going from the known to the unknown, which means that their knowledge of what they knew to be true became the base of the discovery of the unknown. तो मुसलमानों का जो मेन ट्रैवलिंग होती थी, जो मेन उनकी जर्नी होती थी, वो नोन से अननोन की तरफ होती थी. जिस चीज़ को वो जानते थे, उसी से फर्दर एक्सप्लोर करके, रिसर्च करके वो अननोन चीज़ों को जानने की कोशिश करते थे. Now we are moving towards the question answers of this chapter. Question number 1. Briefly describe the effects of the expansion of Muslim empire. The expansion of the empire under Abbasids and Umayyads led to a cultured and civilized life particular to Islam. Many scientists, astronomers, doctors, philosophers, mathematicians, they contributed to science and technology. And Baghdad, it became the center of learning. Question number 2. What did Al-Biruni and Ibn Battuta have in common? And who inspired them? Al-Biruni and Ibn Battuta, they both are the famous Muslim scientists. They both travel and they both visited India. Both of them, they were inspired by Al-Idrisi. Number 3. Why is the modern world indebted to Ibn Hatim and Al-Razi? The modern world is indebted to Ibn Hatim and Al-Razi because of their great services and contribution, particularly in the field of medicine. Al-Razi, he gave the concept of hospitals. Along with it, he studied about chickenpox and measles and suggested their symptoms and the treatment. Ibn Hatim, he wrote the book Kitab al-Manazir, which is the book on optics. It is further used for optical research and later led to the development of camera. Question number 4. Write a note on Ibn Rushd and his field of study. Ibn Rushd, he is one of the greatest Muslim philosophers. His family served as qazis for the Grand Mosque of Cordoba in Spain. Ibn Rushd, he studied law, literature, philosophy, medicine, fiqh and ahadith. He wrote many books on law, philosophy, theology, grammar, astronomy and medicine. Question number 5. Describe Al-Khwarizmi's achievement. Al-Khwarizmi, he had great achievement in the field of mathematics. He introduced the concept of algebra as well as he established Indian numeral system and the use of zero in mathematics. Question number 6. Why is geographical knowledge important and which Muslim scientist made this possible? Geographical knowledge, it's really very important. It's important to know about the geography of different lands, to know about the places as well as about the space. The study of geography tell us the impact of topography and the features on the lives as well as on the economic activities of the people.
The Muslim scientist who made this possible was Al-Idrisi. Number 7. What brought the learning of Islamic world into a halt? It was the attack by the Mongols, particularly the Halaku Khan, the Mongol leader. Okay students, now we are moving forward the last question, and that is match the column A with the authors in the column B. Column A में books के नाम है, column B में authors के writers के नाम है. So we are going to match them. Okay, look at the first one, Rehla. Column A में पहला है Rehla. We are going to color it a green color. थोड़ा सा इसको green color करते हैं. And then Rehla को हम मैच करेंगे इसके ऑथर के साथ, and the author is Ibn Battuta. We are using similar colors to match them. Along with it, let's write its number as well. इसका नंबर है 1. This is 1 और this is 1. मैच हो गया. नेक्स्ट पे मूव करेंगे. नेक्स्ट इज किताबुल हिंद. सो लेट्स डू इट विद अ लिटिल पर्पल. किताबुल हिंद हमारा 2 नंबर किताबुल हिंद का है. सो किताबुल हिंद इट्स रिटन बाय अल बैरूनी. लेट्स राइट इट हेयर 2 अल बैरूनी. Okay, now move towards the third one. Al-Maqala fi Hisab al-Jabr wal-Maqabla. So we are going to color it red. इसको थोड़ा सा red color. And let's write it 3 here. इसका number 3 है. And let's match it with the author, and the author is Al-Khawarizmi. It's Al-Khawarizmi. So we are going to write 3. Okay, now let's move towards the next one. The next is Kitabul Ibr. Kitabul Ibr को we are going to color in yellow. Kitabul Ibr यहाँ पे 4 लिखते हैं. And Kitabul Ibr it's written by Ibn Khaldun. यहाँ पे भी 4 लिखेंगे. Now let's move towards the next one, that is Kitab Suratul Arz. Kitab Suratul Arz. Here we write 5, and now let's match it to Al-Khawarizmi. The author of the book was Al-Khawarizmi. The next book is Kitabul Manzar. Kitabul Manzar, it's number 6. So now let's match it with the author Ibn Hatim. Ibn Hatim number 6 is Al-Qanun fil Tib. Al-Qanun fil Tib, it's the book written by Ibn Sina. So we can match it with Ibn Sina. Now let's move towards the last one, that is Kitab Nuzhatul Mushtaq, and it's number 8. Kitab Nuzhatul Mushtaq, it's number 8, and it's written by Al-Idrisi. Okay, completed the chapter. I hope आप लोगों को समझ में आई होगी. कोई इशू, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो you can write in the comment box. Inshallah next class में we'll be moving towards the next chapter. Till then, take care and Allah Hafiz.